तो भाई तूने नंबर दे दिया, सबको मैसेज आ रहे हैं. Hello everyone, my name is Vineet Thaplu, educator at Unacademy Offline Center. I welcome you all on behalf of Unacademy. As General Studies UPSC Prelims paper is over, with me today I have Piyush Gambhir sir, who is an faculty for economy here. We will be having a quick analysis of this paper, and later we will be having a detailed discussion about the answers and the discussion about some of the conceptual analysis part, whatever was being asked in the exam. Piyush sir, I just want to ask you a question. What is your take about the today's paper? आज का पेपर आपको कैसा लगता है? How it was different from the previous year papers? We talk about the conventional sections which they are asking from polity, economy, even geography or history. They have not increased the difficulty level in that, but the environment, science and tech portions, the difficulty level, because they started asking more application based, were slightly on the difficult side. But I think the conventional portions were doable. They were on the medium to easy side, which were like you can attempt those. And was there any change in the options? As we have seen from the last 3 years, there was a drastic shift in the options. Assertion-based questions were there, and then there was option-based question, reasoning-based question. Do you find any change this year also? Yeah, so there were like I think 3 statement questions this year they asked. So they're not following the same assertion reasoning, but they were reverted back to the traditional pattern of 1 statement, 2, 3, 4 options which they used to give. Only 1 statement correct, 2 statement corrects were less. Okay. So those were less in number. Okay. Yeah. So we will again come back to the discussion. Let me just give an analysis with this chart here. So we have made this pie chart here. If you see the questions, economy and the section related, you have around 19 questions there. That is economy plus the schemes. You have around 19% of the questions. Sorry, not 19 questions, 19% of the questions. And polity again, this year the share has 16%. Geography, if you consider, it is around 14%. IR part is 5%. So it means IR remains same, whatever was asked there in the last year. Then environment 11%, history, art and culture 16%, science and tech 14%, and miscellaneous there was 5%. Okay. So subject wise weightage comparison we are giving here 2024 and 2025. Even if you talk about their economy, around 2024 you will see questions are around 16-17. And just to point it out, you can see how economics question have increased and they have bypassed everything this year. Geography section, if you see, sir, your geography section has taken a big fall. Big fall, right? Yeah, right, and right. Economy being higher, 16-17, this year they asked 19. But you see the drastic fall in what geography has witnessed. Yeah, economy has seen a drastic shift upward. If you see, sir, the 2 subjects you take, geography and environment, they have taken a drastic hit this year. Yes. So similarly, polity, if you see around 16 to 17 question, there is a dip in the polity. Yes, economy, there is a slight rise. After that, if you talk about geography, obviously in 2024 around 18-19 questions were there. This year if you see around 13 to 14 questions are there. Environment again 2024 there was 15 questions, this year it is around 10 to 11 questions. But the questions which were asked in the environment, there were at least 3 to 4 questions, more than that I believe, which were directly related to science and tech also. So again if you see the weightage from the environment has decreased. Again history, there is again a rise. If you see comparatively 2024 around you are having 10 questions. So this year it has surpassed 15 questions, around 16 questions from the history. Science and tech, again there is a steep rise. 2024 around 11 to 12 questions. This year they have reached up to 14 to 15 questions. Miscellaneous almost remains same. You can say the IR part also there. So basically if we get a summary from this, the 3 subjects which have taken a hit, which have less number of questions are your polity, geography and environment. And the 3 portions which have covered up for it are economics, history and some portion of your science and tech. So economy, history, science and tech has given you an edge, whereas polity, geography, environment has taken 5 questions away. But even if you talk about science and tech, it's not only around 14 to 15 questions. I told you there are a lot of questions from the environmental part which were directly connected to science and tech. So if we put those questions there, the graph might go to 18, 19 questions also. Definitely. Then types of questions in comparison to 2024 and 2025. There are around, if you see 2024, there were around 20 to 25 questions, right, which was on ABCD option base. This year it is around 19 questions. Then
2 questions were there from straightway? 2 statement types. Statement So types. the biggest has been the 3 statement. You see the larger increase, roughly 40 questions of the paper they've asked in 3 statements. The pattern has not changed in terms of questions, but the statement they've mentioned categorically statement 1. Assertion and reasoning based question, right? And then if you see match the following, again there has been a dip. Last year match the following there were around 8 questions. This year even it is around 1 to 2 questions. Then same, when we talk about statement based and assertion and reasoning, last year there were more questions, this year there are less questions. So the major takeaway this year is if they've played with the options, they've only increased the 3 statements. So they're just diversifying the ways in which they are framing the statements in terms of the options. This diversification we saw in 2022, continued into 23, somewhat in 24 and 25 they've given a new variation. But hardly makes a difference because at least all statements you read, elimination is less but still doable. सर एक और चीज़ हम इसमें ट्रेंड अगर देखें, जैसे पहले एक पैटर्न था, एक फिक्स पैटर्न रहता था सारे क्वेश्चंस का, फिर उन्होंने चेंज किया, बट लास्ट 2 साल से हम देख रहे हैं मिक्स आ रहा पैटर्न. इट इज़ नॉट ओनली मैच द फॉलोइंग, इट इज़ नॉट ओनली ऑन द ऑप्शन बेस. नाउ दे आर गिविंग असर्शन रीजनिंग में भी है, स्टेटमेंट बेस पे भी है, मैच द फॉलोइंग में भी है. यस, वेरिएशन है उसमें. Variation, and I think it's just giving you an idea when you practice that you can diversify your preparation. You just don't get stuck to one pattern. Otherwise, it is statement, you have to know concept, you have to know application. Elimination based technique, sir, which was successful in some of the years, they've categorically mentioned ये नहीं चलेगा. So you will have to know all questions. हम अलग-अलग तरीके से पूछ सकते हैं. और अगर आप इस बार देखोगे क्वेश्चंस लग बहुत इजी रहे थे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. देयर वर सम क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड, बट द फैक्ट वाज आल्सो कनेक्टेड विद द कॉन्सेप्ट. Definitely. Now, so the quick overview of economics question, if you see the trend pattern, 22 and 25 is the year where they asked 18 to 19 questions, 23, 24 still on the higher side, 16 to 17. The only remarked change which we have seen in this year as compared to last is that the traditional portion of banking or even your macroeconomics, whether it was GDP or it was money banking or external sector, these 3 have not seen any questions this year. So you have 1 question on sources of income of RBI, otherwise there's no question on banking. There's no question on external, there's no question on exchange rate, there's no question on trade. So that portion has been completely neglected. That was something surprising. But something on the predicted line was financial markets would be covered. Financial markets were covered, fiscal policy questions were there, though they asked by giving numbers, but those were traditional portions. Seeing the application part, concepts, yes, macroeconomics has taken a hit, 7-8 questions, macroeconomics mostly concepts, but it's 12-13 questions on the applied part. So you, again, the newspaper reading which we keep on repeating comes into play yet again, because that is from where you can cover those topics. Concepts when applied is the newspaper, and this is, you can see the pattern also this year. Sir, any role do you think here was on the economic survey and all? Economic survey, definitely, because your concepts, fiscal policy, mostly you have to know the meaning of those terms, payment systems. Even if you talk about the whole capital market, financial market, a lot of this has been covered in the survey. Okay. So economic survey, since it's a compilation of the 1-year economics events, it's definitely helpful in getting those. Any questions on the budget part? Yeah, budget, this was budget we've not seen. Fiscal policy, they've asked questions, but they did not frame question on budget. So direct fact-based questions were less, more of applied questions, sir. Okay. So agar income tax, you know, agriculture income, they asked how exactly it is taxed. So those were application-based, they were not directly fact. Fact were 2 or 3 questions where you had to know the facts, otherwise it was pretty much doable. Okay, thank you very much, Pusa. I will now invite Kritika ma'am to give you analysis about the history paper. So Kritika ma'am will be discussing with you the level of difficulty in prelims regarding the history questions and which portions were mainly targeted. Yeah. Welcome Kritika ma'am. Hi sir, hello sir. So this time history was quite moderate. If you take the number of questions asked this year, we had 16 questions in total. If I give you the split up, ancient we had 5 questions, medieval 2, art and culture 1, and modern 8. So there goes like 8 plus 8, 16 questions in total. And how do you categorize it on the level of the difficulty, ma'am? So this time the paper was considerably moderate. I will keep a fix it to moderate level. Okay. And were there questions this year from these sites, Indus Valley sites and all? So this year the UPSC has actually shifted the pattern. Okay. Like, you know, last year it was more like in depth. Okay. This year they've kept it like factual and conceptual. So modern was more conceptual, lot of
analysis was required. So it means application base was Yeah, there. application Paper was dynamic. yeah, dynamic. Okay. Ancient medieval was very factual. And if you talk about options which were given there, can you just tell something about the options specifically with respect to the history questions? So the options, when you look at it, the factual part, when I say ancient medieval culture was very factual, and UPSC's made it very clear that the other options what they've given is from different sources, different facts. So a student who's considerably good in revision and memorizing the facts, I think ancient medieval culture would be easy. 8 out of 8 questions they would easily clear it. Modern was a little bit tricky. Okay. We have there a chart. Yeah. Even if you compare 2021 and 2025, yes, 2021 onwards we have seen a slight drastic fall in the questions being asked, but 2025 again there is a rise. If you see 2021 there were 20 questions, 2022 around 15 questions, directly a fall of around 5 questions. 2023 somewhere 14 to 15 questions, 2024 10 questions, and as you were saying the level of difficulty was very high. Very high. But in 2025 the paper is moderate, and again the questions have crossed the 15, around 16 questions you have from the history. Thank you very much, ma'am. Thank you, sir. I will now invite Anubosa. He will give you analysis about the polity and IR. Hello learners, hello sir. Hi sir. So before we go ahead with the discussion, let's go with the analysis. थोड़ा पॉलिटी के बारे में देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए. अगर हम 2021 से देखें और 2025 तक बड़ी एक रोलर कोस्टर राइड रही है पॉलिटी में. Especially if you talk about 2021, questions were around 15 to 16 or we can say up to 17. But 2022 में आप देखो एकदम से ग्राफ गिर रहा है. 2022 में क्वेश्चन हमारे को 10 से 11 मिल रहे हैं. And then again in 2023 we have seen slight rise around 14 questions. 2024 again there was a rise around 18 to 19 questions. But this year again there has been a dip. I will not say the drastic dip. एक दो क्वेश्चंस का ऊपर नीचे होना doesn't mean कि बहुत ड्रास्टिक डिप है. हाँ, 5-6 क्वेश्चन का डिफरेंस है तो मान भी लेते हैं. तो इस बार भी अगर आप देखो 16 से 17 क्वेश्चंस हैं. तो आईआर के बारे में अगर हम बात करें, आईआर की भी एक जर्नी बड़ी रोलर कोस्टर राइड रही है. 2021 में क्वेश्चन थे 2 से 3, 2022 में उन्होंने 12 क्वेश्चन पूछे, 23 में फिर 10 क्वेश्चन, 24 में बहुत ही अगेन देयर हैज बीन अ फॉल. इफ यू सी अराउंड 5 क्वेश्चंस आर देयर, लेकिन 25 में ऑलमोस्ट 24-25 का टाइम सेम रहा इंटरनेशनल रिलेशंस का. तो सर मैं आपसे ये पूछूंगा, हाँ सर, इस एनालिसिस में मैं आपको बताना चाह रहा था. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन सी टू बी यूनिफॉर्म ऑल अक्रॉस 2021 टू 2025 इज वी कैन इजीली से दैट क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी मोर देन 12 टू 13. तो पहले होता था कि क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी अप टू 20, बट नाउ व्हेन वी एक्चुअली एनालाइज इट देयर हैज बीन अ स्लाइट डिप इन द लास्ट 5 इयर्स. बट अभी भी अगर आप देखेंगे जो हमारे 3 बार है वो दिखा दे क्वेश्चंस आर मोर देन 15. सो समथिंग दैट वी कैन बी अश्योर्ड ऑफ इज द फैक्ट दैट 15 क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम पॉलिटी. ऑब्वियसली ऐसा बोलना कि किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा राइज और फॉल है. हां एग्जैक्टली. 1-2 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन का डिफरेंस है. जैसे हम अगर ज्योग्राफी एनवायरनमेंट की बात करें, आई विल कम टू दैट एनालिसिस आल्सो. दोनों को मिला के देखिए कोई बड़ा फॉल नहीं है. बड़ा फॉल नहीं है. ट्रू सर. आंसर एक अगर आप पैटर्न देखेंगे बिफोर 2021 आई थिंक देयर वर मोर क्वेश्चंस दैट वर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम पॉलिटी, परहैप्स बिकॉज जब से एक आइडिया है कि हमारा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी प्रीलिम्स अब ये है. So there is equal weightage that is now being given to environment, geography. So that I think is something that is also getting reflected here. जहाँ पे आप देखते हैं कि now one can easily presume questions are going to be around 15 to 20. Okay. Yes sir. मेरा कुछ क्वेश्चंस है आपसे. जैसे इस साल का पॉलिटी का पेपर कैसा रहा है? जी सर. डायनेमिक था, फैक्चुअल था, कॉन्सेप्चुअल था, एप्लीकेशन पार्ट कितना था, और जो ऑप्शंस थे वर देयर डायरेक्ट ऑप्शंस ABCD, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, एसोसिएशन रीजनिंग पे क्वेश्चन थे, मैच द फॉलोइंग पे थे. यस सर अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट हर तरह के ही थे, बट एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर आई थिंक ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से रखे गए थे. जहाँ तक हम बात करें व्हाट वाज द नेचर ऑफ द पेपर, हम इजीली कह सकते हैं कि एनालिटिकल बेस था, बट ऐसा नहीं था कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो समथिंग आउट ऑफ द ब्लू इज कमिंग अप. देयर वर फ्यू क्वेश्चंस, पर्टिकुलर 2 क्वेश्चंस जहाँ आप देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव बॉडीज पे, मिनिस्ट्रीज पे एक्चुअली सवाल पूछ लिया था जो काफ़ी ट्रेंड से हटके है. बट जनरली अगेन जब हम लास्ट 5 इयर्स को एनालाइज करते हैं, अगेन इट बिकम्स क्लियर कि 1 या 2 सवाल ऐसे होते ही है जो थोड़ा ट्रेंड से हटके आते हैं. तो बाय एंड लार्ज जो मेरी रीडिंग रही है, अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, अगर आपकी अच्छे से बार बार रिवाइज किया है, क्वेश्चंस लगाए हैं,
पॉलिटी शुड नॉट बी अ वेरी बिग इशू. एक चीज़ और मैं ज़रूर बोलूँगा सर, इसमें एक डिफरेंट ट्रेंड हमने क्या देखा, जनरली ऑलमोस्ट एवरी ईयर वी आर हैविंग 2 to 3 क्वेश्चंस दैट आर कमिंग फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स. दिस टाइम दैट ट्रेंड हैज़ बीन ब्रोकन एंड इंटरेस्टिंगली वी सी क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम ऑल पार्ट्स. तो हमारे पास पंचायती राज के भी सवाल है, हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट की पावर्स, ऑर्डिनेंस पावर्स, गवर्नर, हर तरफ से सवाल आए हैं. एंड आई थिंक एक जो चीज़ यूपीएससी देख रहा था कि जो कन्वेंशनल बच्चे बस एमसीक्यू करके जाते हैं, उस तरह के सवाल नहीं है. हाउ मच यू हैव रिवाइज्ड योर पॉलिटी बुक अगेन एंड अगेन, योर कंसेप्ट्स अगेन एंड अगेन, उस पर फोकस रहा यूपीएससी का. बट अगेन ऐसा है दैट ऐसा नहीं था कि अगर आप पढ़ के गए हैं तो इट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट दे हैव आस्क्ड. सो इट इज प्रीटी मच इन सेम लाइंस एज टू व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन लास्ट 3 to 4 years, सर. थैंक यू वेरी मच. यस सर. तो अगर हम देखें आईआर में भी, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई स्टैटिक पार्ट में क्वेश्चंस नहीं आए हैं, कुछ इंटरनेशनल बॉडीज में क्वेश्चन आए हैं जो कि इन जनरल इफ एनीवन इज इन रेगुलर टच विद द न्यूज़पेपर्स, so they could have easily attempted such questions. Okay, now if you move towards the another part, we have geography. So again in geography 2021 there were around 14 questions, 2022 again the same 14 questions, then 2023 it crosses 16 to 17 question, 2024 it was around 19 questions. This year in 2025 we have around 14 questions from the geography. Now again I am telling you there are some questions in environment which could have been solved with the geographical concepts, even with application of the science and tech. Like if we talk about coal gasification like a question, when we talk about the energy sector with respect to geography, it not only we teach there what coal gasification is, but yes the process oriented part is also included there. So geography में भी अगर आप देखो तो almost 2021 से आपको except 2024-23 में you will find a increase there in a graph. Yes 2024 में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे, 5 में slightly there is a dip, और जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे मैक्सिमम क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के हैं वो आपको कॉन्सेप्चुअल बेस मिलेंगे, कुछ मैपिंग बेस से भी थे. मैं उनका थोड़ा आपको एनालिसिस दे दूं. 14 क्वेश्चंस में जियोमॉर्फोलॉजी में से 2 क्वेश्चन आए थे, एक रॉक्स में पूछा गया था, एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में. बहुत साल बाद ज्योग्राफी ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में दोबारा क्वेश्चन रिपीट किया है. लेकिन अब रॉक्स की बात करें, मेन से पूछा था कुछ साल पहले, इस बार उन्होंने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया है. क्लाइमेटोलॉजी फिर से एक फेवरेट पार्ट रहा है. 4 क्वेश्चन डायरेक्टली क्लाइमेटोलॉजी में है, उसमें डायरेक्टली एटमॉस्फेयर रिलेटेड, टेम्परेचर रिलेटेड, और एक क्वेश्चन आया सोलर फ्लेयर से, कोरोनल मास इजेक्शन. आप इसको साइंस एंड टेक का पार्ट भी कहिए, आप इसको ज्योग्राफी का भी कह सकते हैं. फिर मैपिंग से इस बार 3 क्वेश्चन आए हैं, जैसे एंडीज किस किस कंट्रीज में से पास होता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था. उसके बाद लेक्स के बारे में क्वेश्चन आया कि इक्वेटर से कौन सी लेक्स पास होती हैं, जो कि आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. जब आप सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओशंस की पढ़ते हैं तो हम डिफरेंट एरियाज को, इनलैंड वाटर बॉडीज को मार्क करते हैं. उसके बाद उन्होंने 2 क्वेश्चंस बहुत सालों बाद इस बार पूछे हैं, एक है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से, एक है टाइम जोन पे. इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस आर देयर. एग्रीकल्चर एक स्कीम बेस्ड क्वेश्चन था, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, स्कीम बेस्ड. ज्योग्राफी में भी व्हेन वी टॉक अबाउट द मिल्क रेवोल्यूशन वी आल्सो गिव अ ब्रीफ अबाउट दैट. सो ऐसा नहीं है देयर इज अ स्लाइट डिप, बट ठीक है, एक बैलेंस पेपर पूछा गया है, वेयर आई विल रैंक इट बिटवीन मॉडरेट, डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा नहीं था, बट यस कॉन्सेप्चुअल पार्ट था. उसके बाद अगर हम आगे बात करें एनवायरमेंट की, एनवायरमेंट 2021 16 क्वेश्चंस, 2022 15 questions, 2023 around 14 questions, 2024 15 questions, this year again it has reached to 10 to 11 questions. लेकिन अगर हम टेक का ही पोर्शन इसमें ले तो मुझे लग रहा है एनवायरनमेंट के क्वेश्चन 7 से 8 के बीच रह गए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसमें ऐसे थे जो टेक से रिलेटेड भी थे. सो यू कैन सॉल्व देम विद द साइंस एंड टेक कॉन्सेप्ट, यू कैन सॉल्व देम विद द व्हाट यू कॉल दिस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी कॉन्सेप्ट, लेकिन दोनों करंट बेस्ड क्वेश्चन थे. तो इस बार साइंस एंड टेक में स्टैटिक क्वेश्चन कोई नहीं पूछा गया, एक्सेप्ट इफ यू टॉक अबाउट एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था व्हाट यू कॉल दिस रेन फॉरेस्ट और ओशंस के बारे में, वो एक पार्ट ले सकते हैं हम स्टैटिक, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देयर वर दिस टाइम फ्रॉम द करंट अफेयर्स पार्ट. एनवायरनमेंट में कन्वेक्शन से डायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक पेरिस समिट में उसने आर्टिकल 6 का पूछ लिया है, COP 28 पे क्वेश्चन पूछ लिए हैं. इट वाज एक्सपेक्टेड कि इसमें क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा. बाकी अगर आप और देखिए स्पीशीज पे क्वेश्चन पूछा है, अगेन अनप्रेडिक्टेबल. सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर देयर व्हिच वर अगेन फ्रॉम द करंट अफेयर बेस और वेरी अनप्रेडिक्टेबल फ्रॉम दिस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पार्ट. So together if we consider environment and geography, you have more than around
14 questions from the geography, around 10 questions from the environment. So if you get around 24-25 questions you have from this section. Then let's move to another part, science and technology based questions. Again static science and tech से कुछ नहीं आया, static science से कुछ नहीं आया, सारा का सारा पेपर करंट बेस पे था और एप्लीकेशन बेस पे था. Like अगर हम एनालिसिस देखें 2021 में अराउंड यू हैव 13 to 14 क्वेश्चंस. 22 में अगर आप दोबारा देखें 2021 में अराउंड यू हैव 12 to 13. 2022 में ये 14 पे चला जाता ग्राफ. 2023 में ऑलमोस्ट सेम ऑफ 2021 अराउंड यूर 11-12 क्वेश्चंस. देन 2024 में अगेन देयर इज अ डिप ऑफ जस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस. 2025 में अगेन इफ यू सी द टेक पार्ट हैज शोन अ ड्रास्टिक इंक्रीज, 15 क्वेश्चन. मैं 15 बोल रहा हूं बट बहुत सारे क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं एनवायरमेंट के हैं जो कि टेक से रिलेटेड है. तो यू कैन चेक लेटर आगे देखते हैं तो इट माइट गो इवन इट माइट क्रॉस 15 ऑल्सो देयर. सो दिस वाज अ वेरी क्रिस्प एनालिसिस कि पेपर का अगर मैं फिर कहूं तो एक मीडियम लेवल का था, मेनली एनालिसिस बेस्ड था, डायनेमिक नेचर था अलॉन्ग विद द फैक्ट्स. जैसे मैप पे बहुत सारा स्टूडेंट्स कंसर्न रहते हैं हमेशा, तो मैपिंग में इस बार 3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए. रिसोर्स पे 2 क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने, मिनरल्स पे ऑब्वियसली. सो वी विल बी अगेन कमिंग बैक शॉर्टली. स्टे ट्यून्ड with the detailed analysis of the paper. We will come up with the section wise and discuss the not only the what do you call this options there which was correct or incorrect. We will give a detailed analysis also. Thank you very much. Let's crack it. मुझे एक चीज़ बता, जिस हिसाब से टीचर्स को बुलाया था स्लाइड्स